Good morning, my dear students, and welcome to this BoS for Success session for the subject Financial Management at intermediate level. And I hope that you are going through your preparation and you have practiced your revised test papers as well as mock test paper. This is paper 6A, so the first part of the paper 6, that is the last paper of the group 2. Quite significant in terms of marks to be scored. This is another numerical part, which again require your conceptual clarity as well as uh, you know that how you practice this particular paper, the questions of this particular paper. So conceptually you need to understand, and then probably you need to you know do a lot of practice. There are numericals given in the study material of financial management, uh, and then there are revised test paper, the previous year test papers, and all those things. The mock test paper, which BOS comes on a regular basis. You can always practice those and make yourself perfect. It's very important that you deal with the mock test paper in real examination condition. So take the time of 3 hours and then try to find out that where you are going wrong, or any particular chapter where you feel that your concepts require more clarity. So all those small things you need to factor in before deciding that how we'll be going for this. So with this, mm, let us begin. I can see some of the students are there. Mr. Ashwini, Miss Ashwini, in fact, Miss Akam Ashwini. Uh, any question to start with, where you finds your problem, if you want to say? You please enable them to speak. So Miss Akam Ashwini, if I'm pronouncing it correctly, I hope. Uh, do you have any particular doubt, particularly related to any of the area where you feel that you require some help, or you have some doubt? You can please let me know. Any question? Okay. So let us go forward. I hope that you'll be, he is able, not able to unmute. Can you enable them to unmute, please? Just a moment. Yeah, I think, Hi, sir. yeah, yeah. Hi, sir. Good Any morning. issue or any of the area you think I should cater in, or I should reply you? Any Sir, doubt I you have have? few. Yes, sir. I have few doubts in ratio analysis section. Okay, please, you can ask. So, sir, I understand that in one of like in the ratio analysis chapter, it is also said that the ratios are not rigid and they change according to the requirement. So that's one of the line in the study material. So, sir, for sales to proprietary ratio, the actual ratio that is given in the book is different, but while solving sums, in one of the sum, the ratio there given is different. Okay. And also, sir, I just want to understand where to use what. So sir, in that particular sum, it was written as sales to proprietary ratio, and in somewhere it is written as proprietary ratio to sales. So is there any difference with the vocabulary, like with the flow of using words? That is one thing, sir. And one more thing is, I just want to logically understand few ratios, sir. That is Q ratio and and there is one more. Yes, sir. Q ratio is one such ratio that I can't understand it logically. And these are the two questions that I have
Okay, right so now, sir. first is sales to proprietary ratio. You kindly mail us that in which question it is given as opposite to sales and proprietary. I think it should be one only. Yes, there are Okay, certain areas where proprietary fund we can use differently, equity shareholders fund we can use differently, or we can use debt equity ratio as differently. So this you can mail us exactly which question which has been done in a okay, different way. Fine. sure, And sir. second about the Q ratio, how Q ratio is calculated? Can you just let me know how it is calculated? Just a second, sir. The this particular formula is not on top of my head. Just a second. Okay. So I think the explanation is given in the study material. Let me see if I have covered that. So Q ratio is the market value of equity and liabilities divided by estimated replacement cost of assets. Yeah, I think it is there. Yeah. So if you just see the presentation on the screen, it is the Yes, last sir. ratio. Yes, sir. Q ratio is basically calculated when from the point of view of the owners. Owners in a company are the shareholders. So shareholders want to know what is the Q ratio. Q ratio basically says that whatever the liabilities you have, liabilities means your own capital as well as the outside liability. So both. So your own capital means your equity, maybe some of the debts and all. So market value of that you have to take. So there is book value of equity share and there is market value of equity share. So you take the market value of all this, maybe preference, debenture, equity, everything, and then add the liability. So that is one part. And then you compare the market value or the replacement value of the asset. So Q Oh, ratio is a ratio. Obviously, it is not actual value. It is a ratio which tells us, which gives us some idea that if I compare the market value of my owner's capital plus liability and compare it with the market value of the assets, market value or the replacement value, that is another way of calculating your market value, how we can replace it. So if I compare what is my position, whether it is more than one, less than one, greater than one, okay. So basically, this is one of the way to find out the strength and weakness of the company, comparing the asset side and the liability side. So that is basically the use of the Q ratio. So logically, you are calculating the market value or the replacement value of both the side, market value of the liability side and the replacement value of the asset side, and then you are trying to so, compare whether you have your assets covered by your capital well or not. So that's the way to look into the Q ratio, and a lot of so, sir, organization here does the it to find out the liabilities. SWOT analysis. Yeah, please. Okay. So, sir, my doubt is like in this liabilities, it includes all liabilities, like Yeah. non-current and current both, right? See, there are two ways to look into it. Yes, actually, it's everything is included, current and non-current. Okay. Yes, sir. When practically companies use it, or the research people are use it, or the companies, the investor company use it, sometime they may take, let's say they will be taking only the market value of equity, not liability. Okay, for an example, Okay. that is also Q ratio, but I want that I will not be considering that, and I will be considering on the only the equity, whether my equity is able to cover the maximum percentage of your asset. Are you getting my point? Yes, sir. So that's known as improvisation. So when you will be Okay. going into the market, this is all as per the book, as per the study material. So basically the theoretical study. When you will go to the market field, you will see a lot of improvisation of these ratios. Got my point? Very Okay, good sir. question. I think I must appreciate the question. So, the improvisation is done based on your requirement. That's why it is said that ratios, there is no thumb rule as such. Got my Yes, sir. point? So Yes, I according to your understand. requirement, what you want? You want a conservative way. So for an example,
uh, one of the ratio we have seen, debtors turnover ratio or receivable Yes, sir. turnover ratio. Okay. Yes, sir. So when we take credit sale into consideration in that, okay, and there are Yes. certain ratio, for an example, inventory turnover ratio, where we don't take sales into consideration, we take cost of goods sold into consideration. It's not Yes, that sir. the turnover ratio I cannot calculate. You can see it here. The oblique is given. Now, what is the thin line? Where I should be taking sales and where I should be taking cost of goods sold, it will depend what you are calculating. So when you will be calculating inventory, you will be more towards cost of goods sold. Okay, Sales you will not sir. be considering Uh, because inventory you do not want profit to be part of it. Got my point? yes. So Yes, sir. accordingly, this ratios, it's when you will be going up and will be studying advance or you will be going into the market field, you will see that these are the basic platform, and then the improvisation as per the requirement is done by the market people, right? Yes, sir. Yes, sir. Okay, a very good Uh, question. Any sir, other chapter, any thank other you. doubts you have? So, sir, in this same chapter, in the mock test paper 2 that is recently conducted, so for fixed assets turnover ratio, I have used sales divided by fixed assets for like when I am solving it. But when I saw the suggested answer, it is given as cost the COGS divided by fixed assets, sir. But the question was silent. It didn't mention like I whether I have to think calculate if the fixed assets question is based on. silent, and in this case you can go for both. Only thing Okay, you sir. can put a note, you can go for both. We have Okay, taken sir. one, but Okay. it does not mean the other is not correct. That's why I'm saying, and Yes. in the examination, we try to take care of all these things. So in the model Yes, sir. solution, when the Got it. suggested answer will come out, if you Mm-hmm. see, you will find a lot of alternatives are given. Yes, sir. Okay, so we take care Okay, of sir. those issues. So conceptually, you should be correct, and always when the question is silent, it will be better that you put a note into it. Yes, sir. Okay, sir. That's all for now, sir. If there is anything, I'll put it in chat. Thank you so Right. much, sir. Thank you. Thank you very much. Nice question. Some person has asked, I don't know whether it is your question. When both COGS and sales are given, then sales should be considered. Okay, not always. Like as I told you, inventory turnover ratio, cost of goods sold should be preferred. In fact, that's should be the ideal one. So it will depend which ratio you are calculating. Whether, see, the difference between cost of goods sold and sales is profit. Am I correct or not? So where profit element should be taken, where profit element should not be taken, that will make all the difference. Right? I don't know who has sent this question. Then another margin. Okay. Another question is there. While working out working capital ratio when both okay, you mean to say working capital ratio? Fine, 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 fine. Yeah, inventory is a part of working capital. Inventory is a part of current asset. But in working capital also there are certain components which depends on sales, and there are certain dependence which is there on uh, cost of goods sold. So working capital ratio you can be flexible, and depending if both is given, you can do both sales as well as cost of goods. Inventory in particular, I will prefer that you should go for cost of goods sold, and that's the way I think it is given in the study material as well. Okay, Kuldeep, Kuldeep, is it clear? And if you can unmute yourself and can speak, that will be good. Kuldeep, can you unmute yourself? Some
the person want to. Yes, please. Yes. Yes, sir. When I was asking, when both COGS and sales are given, and this is silent, then sales, uh, this should be worked out based on sales. Am I right? You mean to say about working capital ratio? Yeah, this working capital TO ratio, turnover Working ratio. capital turnover ratio, as I told you, is having component of inventory and component of other things also like receivables. So you can go for both. It's not that you have to go for sales only. By giving a note, you can go for both because both components are there. The turnover, when you want the profit element to be taken, there are two approach. One is the conservative approach, one is the normal approach. If you want the conservative approach, you take cost of goods sold. Otherwise, you take sales. Okay, but both is correct. Okay, clear. Thank you. Okay. Thank you. Yeah. Any other question from anybody? Okay. So what I was telling in the initial part when I started, thank you very much for your questions. So when I was telling, overall, if you see that how your syllabus is framed. So I told you three kind of decision which is given in the first chapter itself, the functions of financial management. So if you see that you have financing decision where you have the capital structure, where how much capital, how much equity, how much debt, what should be the composition and all. Then you have leverage, how much benefit you can take by putting more and more debt. And then we come to investment decision where you require a hurdle rate or discounted rate or cost of capital for each of the things. Cost of capital again will be depending on four resources mainly. One will be the cost of debt, where the tax is also applicable, so you can have tax shield. Then there is cost of preference share, which is not very preferred way of getting the capital structure nowadays. Then there is equity, and cost of equity can be calculated in various ways. Cost of equity, when you are calculating it, can be calculated on earning price ratio, it can be calculated on dividend yield ratio, it can be calculated based on realization, it can be calculated based on CAPM model, capital asset pricing model, and then retain earning. So retain earning basically means if you are not giving the money, or we are trying to find out the opportunity cost of the cost of equity. If we don't take it from the market, then what will be the cost? And in our study material recently, we have also excluded the personal income tax rate into that. So that also be careful. Obviously, sometime when it is given in the question, we also consider it. It happens in the last term, if I remember correctly. So this is the way you calculate the cost of equity. So cost of debt, cost of preference, and cost of equity, and then cost of retained earning. These are the four major sources. And then we calculate the weighted average cost of capital. Then we calculate the marginal cost of capital, and there are various combination and all, when the market price to be taken, when the net price to be taken, and various type of numerical which is given. So that is cost of capital part. That is your COC, and then there is capital budgeting or investment decision in that part, which is having mainly five techniques. Three with the help of the present value, two without taking help of the present value, two with the help of three, that is net present value, the first one, then the internal rate of return, the rate of return at which your NPV will become zero, and the third one, the profitability index, which will compare your inflow, market value of inflow and outflow, and will tell us that whether your index is going on correctly or not. And then without taking the present value into consideration, two traditional way, one is very popular, that is the payback, within how many years I'll be getting back my money, and then the accounting rate of return based on the accounting profit calculation. And there is one improvisation on payback. Payback can be calculated taking the discounting factor also into consideration. And then we get to into dividend decision. Very simple, how much to be paid and how much to be retained. Okay, retention ratio basically
is depending on the dividend ratio. And there are various models in that: Walter model, Gordon model, and MM approach model. These three model. And MM basically says whether you are declaring dividend or not, there is no impact. Whether Gordon and Walter is having certain other aspects, other thought process, and how to be calculated. There is multiplier option also. There is Graham Dodd model also. So these are the different concept which is given, and different factors which will determine, the legal part we have not covered in the financial management. Basically, the financial aspect is only covered. And then comes the working capital management, the uh, short-term capital management of the finance. And there are various components. First of all, you need to understand how you'll be calculating the working capital requirement. Working capital will depend on a cycle, operating cycle. So you will start with cash, then raw material, then WIP, then finished goods, then debtors, then again cash. This is the way this operating cycle moves. So how you calculate the operating cycle and how you find out the working capital requirement, that is one area. Then we go to the components of the working capital. In the components, the major components and very, very important from your side is the receivable management or the debtor management. What is credit policy? What is the terms? How the discount is given? What are the different options? What is the opportunity cost? How it is to be calculated, and various types of numerical. And then factoring will be adding little bit of complexity into it. So whether to avail the services of factors or not, how it is to be done, all these things are basically seen in this particular area. And then we have little bit of inventory. I think costing who are doing, they will be able to cope up with that. And then we have the little bit of banking finance also in the working capital. So various components are basically dealt in the working capital, and that's exactly is the syllabus of your financial management. Some of you were asking that which are the chapters for theory. Theory question can come from any chapters, but first chapter, that is the scope and objective of financial management, and then the chapter of sources of finance, that is chapter number uh, 2. So first two chapter, and in that also there are certain areas which you can cover. Definition concept should be very clear. Example also you should be giving, and theory question can come from any other part as well. And from the numerical part, cost of capital is important, leverage, capital structure, investment decision, working capital management. As I told you, there are various areas: receivable management, factoring, a little bit of inventory, cash model. There are two cash model, Baumel and or two models are there, that also you can go through. Cash budget is also there, you can go through that. So this is overall dividend decision. Obviously, the various model, how it is to be calculated, what is the significance is that, when we should declare dividend, when we should not be declaring dividend. All these things are basically discussed in, and I think we have enough concept clearance in the study material. You prepare your own notes and practice as much as possible. I personally believe that even if you clear your 50-60% concept by studying only, if you practice more, it will reach to 80% or 90%, because practice will give you more clarity. Vishal, do you have any question? Sir, Yeah, one minute. sure. Yeah, sir. How to confidence build? How to uh, I think practice it will give you a lot of confidence. So as I told you, few years question paper, study material question paper, first of all you do, then few years question paper, revised test paper, and once you are little confident, you try to attempt some of the mock test paper. That will give a lot of confidence, and give a special emphasis to the case studies. Okay, so whatever the case studies is available,
previous year case studies you try to do, that what kind of question comes, that will give you confidence. I think familiarity, भागना नहीं है सच्चाई से, you should not run away from the truth and you try to practice question as much as possible. That will give more and more confidence. So maybe 40, 50, 60% concept are clear, then if you start practicing, it will give you a lot of moral boosting things to you. Right, Vishal? Yes. Thank you, sir. Thank you. So I'll request Mayank Mayank, I think you will be discussing the mock test paper, some questions. Okay, thank you, students, for your time. And my colleague will be joining, and he will share a few things with all of you. Within a moment, he will be joining with us. Thank you. Thank you very much. कैसे हो भाई लोगों और दोस्त लोग? होप यू ऑल आर वेल एंड enjoying the day. So आज हम will start with the MTP and case scenario number 1 and MTP 2. So one thing I want to explain, or I want to uh, get you in touch with the basically the structure of the question paper. Hope you all know, but if you don't know, I will tell you the most important part or the structure of the question paper. So basically the question paper of FM is of 50 marks, जिसमें से आपके 15 marks होंगे case scenario and the MCQs and another 35 marks for the descriptive questions. So in case scenarios and the MCQ part, there is a one case scenario of 10 marks. So you have to attempt it at anyhow. It will give you a confidence, and also you get a lot of marks since you save your time and you can invest that time in the descriptive part. So another three MCQs is two MCQs of 2 marks and one MCQ of 1 marks. In case scenario, when you are attempting the case scenario, you have to read the questions first. You have to read the MCQs, then you have to read the case scenario part. Since it will save your time and you know what is the requirement of the question. जब आपको पता है कि आपकी क्या, now the next part is descriptive part, which is of 35 marks, and the question number 1 is compulsory, and there are three questions of 5 marks each, and the another three questions, question number 2 to 4, they are optionals. You can attempt any two question out of three, and they are of 10 marks each. And in theory part, question number 4, there are four questions. One is the internal choice question. So basically, you start with the always start with the numerical questions, and for theory part, you will do it in the last, and do all the question in which you are very much confident. So in this way, you can get the exemption, you can get the good marks, and you can complete your whole question paper within the time limits. So we'll start with the MTP. If you have any question regarding the structure and anything else, you can ask me. Next 2 minutes, we'll start with the MTP. Hi, sir. Yeah, hi. Sir, just a small doubt, sir. I Yeah, forgot to yeah. ask earlier. Yes. So, while calculating cost of capital, Hmm. when exactly we should take market values or when exactly we should take face value? Is there any particular thing that we can identify in the question? Uh, So, so, if yeah, yes, yeah, sir. please, please. No, sir. That's all, sir. Yeah. So basically, if the market value is given in the question, try to take the market value,
And Okay. if there is something any point or any little bit of आपको कोई भी हिंट दिया हुआ है क्वेश्चन में कि आपको नेट प्रोसीड्स यूज करना है या फिर आपको फेस वैल्यू यूज करना है, तो आप वो करेंगे. अदरवाइज इफ यू हैव गिवन द मार्केट वैल्यू, you try to use the market value only. If you don't Oh, given the oh. market value but you are given the net proceeds with the Mm-hmm. flotation cost, you will use the net proceeds. If nothing is given, then you will use the face value. So Okay, sir. most important part is market value. Okay, so can we like put it in a note that we have considered market value of face value? Is it fine? So then, if Yeah, the question definitely. is silent, If if the question question is is silent, silent, try to use only the market value. okay, If both are given, the face value and the market value, if huh? there is any hint is given, then use only that part. If any hint is given regarding to use the net proceeds, sometimes the hint is not directly given, there is some line or some point, you have to catch that point. And if nothing is Okay, given, you'll use the market value. okay, sir. Yeah. Yeah, thank you, sir. Okay, thank you. Any other doubt? So we'll Sir, start with sir, the. sir, one Yeah, small doubt. yeah, I'm yeah, sure, sorry, sure. sir. No Sir, issue. in the MTP series 2, Yeah, uh, in the leverages sum, there is this one point, sir, where they have given price elasticity. yeah, That is 1.2. Uh, yes, yes, yes. so where we have to like I have to understand that for how much increase in price, what is the effect on the demand, or that So type of question is there, sir. yes. So So when I yes, sir, yes, when yes, I please. saw the solution, Yeah. they said like the price elasticity ratio was 1.2, and in the answer it is said that for 10% increase in the price, there is a 20% decrease in the quantity, which I didn't understand that, sir, quite. So I have to say it. If Okay. basically then 1.2 is given, the basically for 1 point increase, there is a 1.2% increase in the demand, or 1%. If there is 1% increase in the price, there is 1.2% decrease in the demand. So I will see. You can mail me Okay, sir. also if there is any confusion or any doubt. I will clear it. Okay, sir. Okay. If you have any other doubt, you can ask me. Yeah, Kuldeep. So working note if required, then same need to be kept at the bottom of the main representation part. Kuldeep, yes, you can use after the main representation part, but you can, if the working note is the main requirement of the question, then you can also do it in the front part or the starting point. There is no worries. आप बाद में यूज करो, पहले यूज करो वर्किंग नोट को या बीच में करो, उसका कोई मार्क्स डिडक्शन नहीं होता है. आपको नॉर्मली आपका आंसर करेक्ट होना चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर उसमें क्लियरली गिवन होने चाहिए जो आप आंसर करके आ रहे हो कि आपने क्या पॉइंट यूज करा है, किस बेसिस पे यूज करा है. देन देयर इज नो प्रॉब्लम, यू कैन यूज इट इन द बिगनिंग और एट द बॉटम ऑफ द मेन रिप्रेजेंटेशन. ठीक है. एनी अदर डाउट किसी और का? So let's start with the MTP. So we'll do a case scenario. This is basically an integrated question in which two or three concepts are given in the single case scenario, and you will see in real life you don't be given a case scenario for only a single part for a cost of capital or for a capital structure. Since when you open a company or when you are working in any other company as a consultant or as associate or anything, you will be given a scenario or a situation in which not only one situation is given. Since when you are taking a loan from a company, you have to see the cost of capital, and you also see the
see its impact on the capital structure, and also what is the impact on the leverage part. So whatever decision you want to take in the real life scenario, you have to see it from the whole company perspective, including the capital budgeting, working capital management, cost of capital, and the capital structure, etc. And in your real life also, when you are taking a loan from anybody, from your friend, or for any bank or any financial institution for your own company, you will see how it will impact your the sales, and how it will impact your fixed cost, and how it will impact the whole your business. So you have to see it from a complete point of view. So this is the question regarding it only. This is a case scenario question in which the cost of capital and the investment decision question, and basically you can see the profit and loss, cost of equity, cost of debt, WACC, everything is given. So we'll start with the question. It'll take 2 minutes to read this page. So then we'll start. आप पहले एक बार क्वेश्चन रीड करो, मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। उसके बाद आप मुझे बताना जब जब मैं केस सिनेरियो रीड कर रहा हूँ कि हमें क्या क्या पॉइंट्स की नीड हमें पड़ेगी कोई भी क्वेश्चन करने के लिए। सो फर्स्ट पार्ट इज कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द करंट ईयर। ये जनरल क्वेश्चन है जो कि कंप्लीट आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट होता है किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए, कि हमारा करंट प्रॉफिट एंड लॉस क्या है। नेक्स्ट पार्ट इज रिटर्न ऑन इक्विटी or the cost of equity for the firm. Another part is weighted average cost of capital to be considered for valuing the firm in current year. करंट ईयर का हमें WACC निकालना है। मीन्स हमारे पास यहाँ पे अभी हम एक क्वेश्चन रीड करके एक माइंड में क्लिक होना चाहिए। अगर हमें करंट ईयर का बार बार फोकस कर रहा है कि हमारे पास प्रीवियस ईयर, करंट ईयर या फ्यूचर ईयर, मतलब 2 ईयर हमारे पास गिवन हो सकता है, 2 या 3 ईयर की, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और फ्यूचर आपके ईयर्स, या फिर करंट ईयर और फ्यूचर ईयर्स। तो यहाँ पे आपको करंट ईयर के लिए निकालना है, या आपको फोकस करना है जब भी आप क्वेश्चन रीड करोगे कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। मे बी आप WACC अभी आपने निकाल लिया, आपका एक पॉइंट आ गया कि आपने फ्यूचर ईयर का, नेक्स्ट ईयर का WACC हमारे पास गिवन है कि हम जो नई मे बी कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हमने उसका निकाल दिया। वी थॉट वी हैव डन द राइट वे, बट यहाँ पे हमने फोकस करना भूल गए कि हमें करंट ईयर का हमें कैलकुलेट करना था। सो यू हैव टू फोकस, यू हैव टू रीड द क्वेश्चन क्लियरली। नेक्स्ट पार्ट इज द कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ न्यू डिबेंचर्स। यहाँ पे न्यू डिबेंचर्स बोला, आपको इस पे फोकस करना है, करंट डिबेंचर का नहीं, जो न्यू डिबेंचर है उसका रेट निकालना है आपको। नाउ द लास्ट पार्ट इज NPV ऑफ द न्यू प्रोजेक्ट यूजिंग द डिस्काउंट रेट ऑफ 12%। हमारे पास डिस्काउंट रेट है, हम इसको यूज करेंगे। NPV हमें निकालना है इसमें। तो अब आप 2 मिनट लेके आप ये रीड करो। नेक्स्ट पेज पे हम मूव करते हैं। एक बार जस्ट आप गो थ्रू कर लो, एक बार हम भी रीड करेंगे, विल रीड वन बाय वन।
ठीक है, we'll start with the question. So Virat Limited, a steadily growing company in Mumbai, has been performing well in its current line of business. The management believes the timing is right to expand, and they have approached you, the company's financial analyst. You are the company's financial analyst, and the company is looking for the expansion. So you have to think about the questions they are asking from you to evaluate whether their planned new venture is financially sound. Okay. At present, the company earns 20 lakh in annual revenue. To generate this income, Virat Limited incurs several operating costs. Of course, operating costs तो उसको incur करनी पड़ेगी. Business अगर वो run कर रहा है. About 40% of the revenue or rupees 8 lakh goes toward the COGS. COGS हमारे 8 lakh यहाँ पे given है. Additionally, the company spends rupees 2 lakh on employee salary, 50,000 on electricity and the other overheads, and another rupees 50,000 on advertising and the promotional activities. After all these expenses, the company pays 35% tax on its profit. Profit के ऊपर हमारा जो टैक्स रेट है वो गिवन है, हमारे एक्सपेंसेस गिवन है. हम प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ से ये वाला पार्ट हमारा पीएनएल निकालने के काम आएगा. विल यूज दैट पार्ट फॉर पीएनएल. ये हमारे फर्स्ट एमसीक्यूज की रिक्वायरमेंट है. To run the existing business, Virat Limited uses a total capital of 1.5 crore. उसकी total capital है 1.5 CR की. This capital is funded partly through the equity of rupees 80 lakh represented by the 8 lakh share, that is the face value is rupees 10 each, and the partly through debt of rupees 70 lakh on which the company pays 9.95% interest rate. कितना है भाई हमारा करंट वाली डेट का 9.95%. This is a pre-tax. So since the company is listed on the NSE, its performance is compared with the market index, which has produced a return of 14.95%. ये market rate of return है हमारा निफ्टी का या फिर लेट से जो भी मार्केट इंडेक्स उस पर एप्लीकेबल हो उसका. द कंपनी कैरीज अ बीटा ऑफ 1.10. बीटा हमारा क्या होता है 1.1 है कि अगर हमारा मार्केट कोई 10% मूव कर रही है तो हम 11% मूव करेंगे. बीटा हमें ये इंडिकेट करता है कि मार्केट और हमारे बीच में क्या रिलेशन है, अगर वो कितना मूव कर रही है तो हम कितना मूव करेंगे. इंडिकेटिंग अ स्लाइटली हाइयर रिस्क देन द मार्केट. ऑफ कोर्स बीटा हमारा बीटा अगर हमारा 1.1 है, 1 से ऊपर है तो हमारा मार्केट से थोड़ा ज्यादा रिस्क है, तो हमारा रेट ऑफ रिटर्न भी थोड़ा सा मार्केट से ज्यादा होगा. For risk-free benchmarks, the latest RBI T-bill is 5.45%. Virat Limited is evaluating expansion into the new product line. The management has already conducted preliminary research and provided expected revenue and the cost of estimates for the next 5 years. हमारा जो new project है उसके लिए next 5 years का हमारा estimates given है. What is the revenue, what is the COGS or the COGS percentage, then what will be the employee cost or the electricity expenses or other advertising expenses. So expected performance of the new project is given from starting from the 2026, 27, 28, 29, 30. It means for the 5 years we are given the performance of the new project. We'll use this for calculating the cash flow for NPV. NPV के लिए हमारा cash flow के लिए use होगा. To begin this project, Virat Limited will need to invest rupees 15 lakh in fixed assets with a useful life of 10 years, and the terminal sale value at the end of 5th year is 7.5 lakhs. It means अभी हमें जो assets purchase करने हैं, we need to purchase the fixed assets which have a useful life of 10 years and the purchase price is of 15 lakh. But since we are conducting the we want to calculate the NPV for 5 years and we are given the terminal sale value at the end of 5th year for rupees 7.5 lakh, we'll use that value in that part for calculating the NPV. This investment will be financed
through a mix of rupees 5 lakh in equity, 50,000 shares of rupees 10 each, of course, and rupees 10 lakh in debt. For this, company issued 10% debenture of rupees 100 each at a premium of 10%. Now you can see कि अभी आपने जो क्वेश्चन पूछा था कि मार्केट प्राइस यूज करना है हमें या फेस वैल्यू यूज करना है, अभी हमारे पास यहाँ पे डायरेक्टली गिवन है, हमारे पास प्रीमियम पे हम इश्यू कर रहे हैं 10% पे, यानी कि हम 110 को यूज करेंगे। यहाँ पे हमारे पास डायरेक्टली हिंट गिवन है कि हमें प्रीमियम पे इश्यू कर रहे हैं, तो हमारी 1110 जो हमारी नेट प्रोसीड्स और मे बी द मार्केट वैल्यू हम इसे बोले, यू कैन से एनीथिंग, यू हैव टू यूज दैट प्राइस ओनली 110 फॉर कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ डिबेंचर to be matured after 5 years and the debenture will be redeemed at par on maturity. Maturity पे हमारा redeem होगा if this line is not given in the question. अगर ये भी line भी given नहीं होती तो भी हम at par ही लेके चलते. If nothing is given in the question, you will use the face value or at par value. Hope you understand the point. Now हम profit and loss calculate करते हैं. टेक योर 2 मिनट्स, मुझे बताओ प्रॉफिट एंड लॉस कैसे कैलकुलेट होगा और कितनी अमाउंट आएगी हमारे पास। अभी तक किसी को कोई डाउट इसमें? इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। कुलदीप, अक्कम, आपके मार्केट प्राइस वाला पॉइंट क्लियर हो गया ना? ओके ग्रेट, यस अक्कम राइट, 1,32,275। सो कि हमने कैसे कैलकुलेट करा, एक बार मैं आपको थोड़ा सा हिंट बताता हूँ कि डायरेक्ट एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है हमारा। फर्स्ट ऑफ ऑल we'll take the revenue part, then we'll deduct the COGS, which is the main part of any business. It covers the majority of its cost, like maybe it include you can say each and everything from a manufacturing perspective, like the cost of raw material or the main cost, any other main cost which is included in the cost of material. Now next part is, yes Kuldeep right, next part is GP, इससे हमारे पास GP आ जाएगा। अब हमारे पास जो अदर कॉस्ट थी जितनी भी हमारे पास, मैं दिखाता हूँ जो मैंने फर्स्ट पार्ट में बोला था, एम्प्लॉय सैलरीज, electricity and the other overheads and the advertisement expenses. We'll deduct all those expenses. In this we will get the net profit before financing cost. उसके बाद हम फाइनेंसिंग कॉस्ट माइनस कर देंगे हमारे डिबेंचर के जो इंटरेस्ट था, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ से हम टैक्स हमारे पास 35% था, बट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारे पास आ जाएगा। In this way you will get the profit for the current year, which is 1,32,275, or maybe the round figure of 270. Someone get Kuldeep is saying the 270, maybe it comes to the 270. And whenever one main point, अगर आपका कोई भी आंसर आता है and the exactly same answer is not given in the options, there is some point difference or some rupees different, so you will take that point which is the nearest to your answer. In this question Kuldeep is saying 1,32,270। अब आप देखोगे यहाँ पे 270 अगर आपको नहीं मिल रहा है कोई भी, लेकिन 275 मिल रहा है, यानी कि आपका आंसर वही होगा। मे बी देर इज सम पॉइंट error, or maybe if you have used the 2 points, someone used the 3 points, so जो nearest आपका आंसर होगा आप वो यूज करोगे। नेक्स्ट इज रिटर्न ऑन इक्विटी। अब आपको रिटर्न ऑफ इक्विटी में यहाँ पे एक चीज डाउट आ सकती है किसी बच्चे को, सिंस नथिंग इज गिवन विच फॉर्मूला शुड बी यूज्ड ओवर हियर। अब आपके पास इंफॉर्मेशन कौन सी गिवन थी, CAPM मेथड की आपके पास सारी इंफॉर्मेशन गिवन थी, बीटा आपके पास गिवन था, मार्केट रिटर्न आपके पास गिवन थी, नेक्स्ट आपको रिस्क फ्री रेट
आपको गिवन था, तो आपको यहाँ से सीधा पता लग जाएगा आपको CAPM मेथड यूज करना है। इसके लिए आपका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला बताओ आप मुझे। टेल मी द फॉर्मूला। और CAPM मेथड आपका लिस्टेड कंपनीज में, ये सक्कम राइट, CAPM मेथड आपका लिस्टेड कंपनी में मोस्टली आपका CAPM मेथड ही यूज होता है, सिंस इट डिपेंड्स अपॉन द मार्केट रेट ऑफ रिटर्न एंड द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न एंड ऑल्सो द बीटा। सो इफ यू आर अ लिस्टेड कंपनी, तो आपको सिंपल से समझ में आएगा कि आपको मार्केट को तो ऑफ कोर्स कवर करना ही है अपने कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए, क्योंकि जब भी आप कहीं पे भी इन्वेस्ट करते हो एज अ शेयर होल्डर, यू विल सी कि what is the return of this company and what is the return of the market index or the whole basically the combinations of companies. So आपको एटलीस्ट चाहिए, अगर आपका एक रिस्क फ्री कंपनी है और आपकी कंपनी में थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा है, तो आपको मार्केट से तो ऑफकोर्स ज़्यादा रिस्क आप अडॉप्ट कर रहे हो, तो आपको रिटर्न भी ज़्यादा चाहिए। मोर द रिस्क एंड द मोर इज द रिटर्न। तो आपका CAPM मेथड यूज होगा। यस कुलदीप अकम, यू आर राइट। सो रिस्क फ्री रेट इज 5.45% प्लस वी हैव मार्केट रेट ऑफ रिटर्न इज 14.95%, ठीक है, माइनस 5.45% इंटू 1.1। कितना आंसर आएगा आपके यहाँ पे? यस, 15.90%। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। What is the weighted average cost of capital to be considered for valuing the firm in current year? अब हमें करंट ईयर का निकालना है। करंट ईयर में हमारी इक्विटी कितनी थी? इक्विटी और डेट 80 lakhs की हमारी इक्विटी थी और 70 lakhs की हमारी डेट थी। इन दोनों की हमारी परसेंटेज बताओ मुझे कितनी होगी? टोटल हमारा 1.5 CR थे, 150 lakhs। 0.533, 0.467, ये हमारा वेट्स आ गए इनके। हमारा इनकी कॉस्ट कितनी थी? इक्विटी की अभी हमने निकाली है 15.90, ये आफ्टर टैक्स भी इतनी रहनी है। और हमारा डेट की थी 9.95%, ये आफ्टर टैक्स हमारी चेंज हो जाएगी। सिक्स पॉइंट 47%। अब विल गेट द WACC, ये हमारा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आएगा हमारा आंसर 8.48, देन 3.02 I think this comes to the 11.50%, B part. If you have any doubt, hope this question is clear. If you have any doubt, you can ask me. आपने फोकस कर रहे हैं करंट ईयर के लिए मैंने पूछा। अगर हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट का हम पूछते तो उस केस में हमारा इक्विटी की 5 lakhs और डेट था हमारा 10 lakhs। यहाँ हमारी रेशियो चेंज हो जाती, हमारा रेट ऑफ रिटर्न चेंज हो जाता, WACC हमारा पूरा आंसर चेंज हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ न्यू डिबेंचर्स। या कुलदीप, यहाँ पे हमारा अगर आपका 11.55% आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आप देखो आपका नियरेस्ट आंसर 11.50 आ रहा है। मे बी कभी कभी आप 2 डेसिमल यूज करते हो, कभी 3 डेसिमल यूज करते हो, तो उसकी वजह से थोड़ा सा पॉइंट में डिफरेंस आता है। तो नियरेस्ट आंसर आपको लेना है इसमें।
कॉस्ट ऑफ न्यू डिबेंचर्स, आपको कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स का फॉर्मूला पता ही है, इंटरेस्ट 1 माइनस टी प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय एन। यहाँ पे हमारे इंटरेस्ट हमारा गिवन था आई 10, टैक्स हमारा गिवन था 35%, रिडीमेबल वैल्यू हमारे पास गिवन थी 100 एट पार, और नेट प्रोसीड्स हमारे पास गिवन थी 110 एट 10% प्रीमियम। हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई हैं, बस हमें इसको फॉर्मूले में पुट करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। बताओ हमारा आंसर कितना आएगा? इसमें आपको क्या करना है, आपको फॉर्मूला लिखना नहीं है केस सिनेरियो वाले पार्ट में, आपको जस्ट रफ में स्क्रिबल करना है, स्क्रिबल करके आपको एक वैल्यू स्क्रिबल करके पुट करनी है, स्क्रिबल जरूर करना है, अदरवाइज आप डायरेक्ट कैलसी पे जब आप कैलकुलेट करते हो कहीं ना कहीं हो सकता है मे बी आप कोई ना कोई आंसर मिस कर जाओ या कुछ ना कुछ आप मिस कर जाओ तो आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा। तो स्क्रिबल जरूर करना है आपको, केस सिनेरियो या कुछ भी है आपका स्क्रिबल जरूर करना है, कोई भी आंसर आप कर रहे हो। यस राइट अक्कम 4.28, ये आपको स्क्रिबल करके आप सीधा डायरेक्ट कैलसी पे कर लो फिर आप। नेक्स्ट इज एनपीवी ऑफ द न्यू प्रोजेक्ट। इसमें एनपीवी का हमारा फॉर्मूला क्या रहता है, आप मुझे एक बार डायरेक्ट फॉर्मूला बताओ, एनपीवी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? यस, विल टेक द कैश फ्लोज इनटू, हम डिस्काउंट रेट के बेसिस पे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, देन विल गेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज। यस राइट, राइट अकम, कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। इस क्वेश्चन में आप देखोगे ना हमारे पास रिवेन्यू सीओजीएस एवरीथिंग इज गिवन, तो हम डायरेक्ट यहां तक अपनी एक नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हैं विदाउट इंटरेस्ट हमारे पास, एंड विदाउट डेप्रिसिएशन। हम यहां से हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, देन हम प्रॉफिट एंड देन हम विल इंटरेस्ट माइनस करेंगे, हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, इनमें से टैक्स माइनस करेंगे हम अपना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा, वापस अगेन विल एड द डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हमारा नॉन कैश एक्सपेंस है, हम इसलिए हम उसको वापस ऐड करेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रिसिएशन, ये हमारे पास कैश फ्लो आ जाएगा, कैश इनफ्लोज। आपने ये देखा होगा हमारे पास टर्मिनल वैल्यू है एट द एंड ऑफ 5th ईयर इज 7.5 lakhs, so this is also a cash inflow at the end of 5th year, so we'll add this terminal value at the end of 5th year। तो हमारे इनिशियल 4 ईयर का तो यहाँ से आ जाएगा, 5th ईयर का यहाँ से आ जाएगा, 5th ईयर में हम ये वैल्यू और ऐड कर देंगे, हमारे पास टोटल कैश इनफ्लोज आ जाएंगे और हम उसको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास present value of cash inflows आ जाएगा। Next we have the present value of cash outflow which is 15 lakhs and we'll multiply it with the present value factor which is 1, so that comes to the 15 lakhs and in this way we'll calculate the NPV। अब बताओ मुझे NPV यहाँ पे कितना आएगा हमारा?
बार आंसर भी गो थ्रू कर लो सारे। ये हमारा नॉर्मल हमने प्रॉफिट एंड लॉस निकाला था, CAPM मॉडल हमने यूज करा था, WACC। नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ डिबेंचर फार्मूला along with its value. Next and the last part is calculation of cash inflows, and then terminal value will add in the fifth year, multiply it with the PVF, which comes to the 6,83,419 in the last year. NPV हमारी आ गई 4,22,133, which is point number I think C, 4,22,133. यहाँ पे आपको कोई भी डाउट है कुछ भी इस क्वेश्चन में, अपार्ट फ्रॉम दिस क्वेश्चन यू हैव एनी डाउट इन दिस MTP or any other doubt from the study material or any other doubt in your concepts in any chapter, you can ask me. We'll wait for 2 minutes. कुलदीप, अक्कम, आपको कोई भी डाउट है यू कैन आस्क. Uh, sir, no doubts, sir, for now. Like on top of mind, I can't remember anything. But sir, like when we are attempting the question paper, sir, because of tension, sometimes even though what is happening is when we are writing exam and after coming back, so after coming back we can like after reading 2 to 3 times of the Yeah, question, we'll be able to answer it, yeah. even though we are not revising anything after exam. But at the exam center, while giving the exam, it's like due to tension or I don't know, we're not like I'm not able to uh, recall anything or I so this thing is happening, sir, when writing exam. So for this, even a senior person, whenever he goes for the new exam, he is in a tension while attempting the answers or while attempting the question paper. So जब भी आप क्वेश्चन पेपर रीड कर रहे हो, आपने रीड कर लिया, आपको 15 मिनट्स मिलते हैं, उसके बाद गिव योर सेल्फ 2 minutes and make yours or you can give your 2 minutes for yourself and just do nothing. Just make your mind calm and just relax. Forget about 2 minutes or the 5 minutes. Just take your 2 to 3 minutes. रिलैक्स करो आप एक बार. आपको आप किसी को भी याद करना, आप वो याद करो, उनका उनको थैंक्स बोलो, जो बोलना आपको वो बोलो. आप 2 मिनट के लिए एकदम शांत बैठ जाओ. उसके बाद आप अपने दिमाग से एक एक क्वेश्चन रीड करो, और उसके लिए आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ेगा. आपको एक दो बारी MTPs अटेम्प्ट करना होगा एट द सेम टाइम. 2 to 5 PM का जो हमारा एग्जामिनेशन का टाइम होता है, यू हैव टू सिट इन अ लोन रूम and ask your any sibling or parents to note the time and take the paper at exactly 5 PM, and no disturbance, nothing, just at the same time in which you are going to attend the exam. आपको 2 से 5 में आपको बिल्कुल कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है एंड यू विल सी. और आपको यही सोचना है कि यू आर इन एग्जामिनेशन हॉल और आपको उस ही तरीके से उसी वे में आपको अटेम्प्ट करना है. आप डोंट थिंक यू आर अटेम्प्टिंग अ नॉर्मल MTP or you are attempting it at your home. You have to just think you are attempting it in examination hall. It will build your confidence, and when you attempt it 2 to 3 times, you will see कि जो आप एग्जामिनेशन में जाके आपको एंजाइटी फील होती है ना, वो थोड़ी सी कम होगी. और जो 2 मिनट वाला मैं आपको ब्रेक कह रहा हूँ ना, 2 मिनट के लिए आपको Yes. माइंड को काम करना है, उससे आप यू विल सी कि आपका है ना आधा 1 घंटा आपको आप इजीली क्वेश्चन करते जाओगे. और उसके बाद फिर आप 2 मिनट का ब्रेक लो. 2 मिनट के लिए आप क्वेश्चन पेपर वगैरह सब छोड़ के आप 2 मिनट के लिए ना आंखें बंद करो, फिर रिलैक्स करो. हर 1 घंटे के बाद आपके पास 3 घंटा, आप हर 1 घंटे के बाद 2 मिनट का ब्रेक लो और रिलैक्स करो, सब छोड़ के. उसके बाद अगेन और आप क्वेश्चन स्टार्ट करो विद द इन विच यू आर मोस्ट कॉन्फिडेंट. और आप उसमें, लेकिन आप कॉन्फिडेंट हो तो आप ये मत करना कि आप उसको स्लोली स्लोली कर रहे हो, आप उसको यू आर राइटिंग इट
writing it to show your energy in that क्वेश्चन only. आपको वो वाला क्वेश्चन अगर आता है तो आपको उसी स्पीड से करना है और उसमें टाइम कम लगाना है. जिस क्वेश्चन को आपको नहीं आता है ना, आपको उस क्वेश्चन के लिए टाइम बचाना है. हम क्या करते हैं जब हम एग्जाम में बैठते हैं ना, हमें जो क्वेश्चन आता है ना हम उसको चमकाने में लग जाते हैं. हम उसकी प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी दिखाना चाहते हैं कि हमें लगता है कि क्वेश्चन आता है तो हम इसमें अपनी पूरी एनर्जी लगा देते हैं, सब कुछ इसमें शो कर देते हैं. आपको वो टाइम बचाना है. जब मेरी स्टूडेंट लाइफ थी मेरे साथ भी ये था कि मैं जिस क्वेश्चन को मुझे आता था मैं उस क्वेश्चन में ही ज़्यादा टाइम लगा देता. लास्ट में आते आते जब 1 आवर बचता था या हाफ एन आवर बचता था तो क्वेश्चन काफ़ी होते थे, तब मैं स्क्रबल करते 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 लिखता था. हमारे पास टाइम नहीं होता था, एंजाइटी पीक पे होती थी उस टाइम पे. और उस टाइम पे हम लेकिन ये देखते थे एंजाइटी पीक पे होते हुए भी हम सबसे ज्यादा क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस उसी टाइम पे अटेम्प्ट करते हैं. तो आपको इनिशियल से वो स्पीड बना के चलिए. ओके सर. आपको जहाँ क्वेश्चन आ रहा है आप करते चलो, जहाँ आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा आप 1 मिनट उसको सोचो, अगर नहीं आ रहा जस्ट ड्रॉप इट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करो. आपके पास जब लास्ट में टाइम बचेगा, थ्योरी पार्ट आपको लास्ट में करना है. ओके सर. क्योंकि आप थ्योरी अगर इनिशियली करोगे आपकी एंजाइटी और बढ़ जाएगी, आपके पास टाइम की शॉर्टेज हो जाएगी. क्योंकि थ्योरी पार्ट इज समथिंग लाइक यू हैव टू स्क्रिबल. आपको जितना आता है आप उतना लिख के आना आपको उसमें. यू हैव टू ओके सर. राइट ओनली डेट पार्ट. और थ्योरी पार्ट कैसा होता है, अगर आप पॉइंट टू पॉइंट अपनी जो मेन चीजें हैं अगर आपने वो लिख के आया तो आप, if the question is of 10 marks you easily get the 5 to 6 marks. So you have to focus on basically on the numerical part. Yes sir. Okay sir. Thank you sir. Okay. Yes कुलदीप, एनपीवी में आपको मतलब क्या इश्यू आता है, क्या दिक्कत आती है, आप एक बार मुझे मतलब आप बेस बताओ कि आपको कैश फ्लो कैलकुलेट करने में दिक्कत आती है या कुछ और फैक्टर है आपको कि कोई क्या क्या आपको पार्ट लेना है एनपीवी कैलकुलेट करने में, उसमें दिक्कत आती है, क्या दिक्कत आती है एक बार आप क्लियर करो. उस के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ कि क्या आपकी दिक्कत है, आप कैसे उसको क्लियर कर सकते हो. हाउ यू कैन improve your NPV calculation. Yes Kuldeep, unmute yourself. हेलो Yes Kuldeep. सर, उसमें क्या है कि प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन होता है ना फ्यूचर आउटफ्लो का, हम्म. तो उसमें कूपन रेट भी होता है. तो कंफ्यूजन होता है कि उस सिचुएशन में कि हाउ टू गो अहेड. विल यू प्लीज रिपीट, आपने लास्ट में क्या बोला, आपकी वॉइस ब्रेक हो गई थी. वो कंफ्यूजन होता है कि फ्यूचर आउटफ्लो है. हाँ. अब फ्यूचर उन्होंने बोला है कि आई वांट 5 करोड़ एट द एंड ऑफ 7th ईयर या. एट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सो एंड सो. हम्म. तो कभी कभी मेरे को चैलेंज आता है कि कौन सा रेट लगाने का. वहाँ पे दो दो डिस्काउंट रेट भी दिया है, समटाइम कूपन रेट भी देते हैं. नहीं, आपको जब भी आप ये कैलकुलेट करोगे आपको एक हर्डल रेट या इन्वेस्टमेंट रेट, मतलब आपको नॉर्मल सिंगल रेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल या सिंगल रेट आपको यूज नहीं करना, आपको कंप्लीट कंपनी का रेट यूज करना है जिसमें आपकी इक्विटी हम्म. or basically the debenture part or the loan part which covers everything. Hurdle rate you have to use over here. तो आपको एक रेट यूज नहीं करना. और आप जो नेक्स्ट पार्ट कह रहे हो कि आपका 5th ईयर में आपको कोई कैश फ्लो की नीड है या 10th ईयर में आपको नीड है लाइक वर्किंग कैपिटल की, समटाइम्स क्वेश्चन सेज you need the working capital at the end of 5th year and it will release at the end of the life of the project or at the end of let's say 7th year or 10th year. तो आपको क्या करना है, जब at the end of 5th year लिखा है यानी कि आपका वो 6th ईयर की इनिशियल हो गया, 5th ईयर का एंड हो गया, तो आपको उस ईयर में उसको ऐड करना है. और जब वो रिलीज होगा हम्म. 5th ईयर में आपका जब है वो तो आपका कैश आउटफ्लो हो गया, जब आपका वो रिलीज होगा 7th ईयर में उस ईयर में आपका कैश इनफ्लो बन जाएगा. तो आप कैश आउटफ्लो जब आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो लोगे तो आपका 5th ईयर में उसको कैलकुलेट करोगे, 5th ईयर में आपका कैश फ्लो है उसको आप करंट ईयर में लेके आओगे, उसकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो में आप उसको ऐड कर दोगे. और जो कैश इनफ्लो है उसको आप 7th ईयर में आपका रिलीज हो रहा है, 10th ईयर में आपका रिलीज हो रहा है, तो आप उसको 10th ईयर में ऐड करके उसकी प्रेजेंट वैल्यू ला के आप नेट प्रेजेंट वैल्यू आप इस वे में निकाल लोगे.
सर और सर ये जो जो ये केस केस सिचुएशन आता है केस स्केनारियो में, तो दीज आर लेंथी क्वेश्चंस, सो देख, व्हाट शुड बी अप्रोच? हाँ मैं आपको इसके लिए बताता हूँ। कभी कभी कोई अगर आपको लगता है एमटीपी में कोई भी केस सिनेरियो या एग्जामिनेशन में केस सिनेरियो रीड करके कोई आपको सिंगल एमसीक्यू लगता है काफ़ी लेंदी है और ये आपका काफ़ी टाइम इट विल कवर ह्यूज टाइम, तो आपको क्या करना है उस टाइम के लिए आप उसको ड्रॉप कर दो। अगर वो आपस में लिंक है तो आपको ऑफकोर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर 5 एमसीक्यूज आपस में लिंक है, एक के बेसिस पे दूसरा होगा, तो आपको फिर तो आपको कैलकुलेट करते जाना है। लेकिन एक सिंगल एमसीक्यूज है लेकिन आपको दिख रहा है लाइक इन दिस एमसीक्यू एनपीवी, दिस इज द लेंथी एमसीक्यू, सो अभी के लिए आप इसको ड्रॉप करके आप आगे बढ़ते जाओ। जब आपके पास आखिरी में टाइम बच जाए तो आपको क्या करना है, आपके पास ऑलरेडी क्वेश्चन में टेबल गिवन थी, आप यहाँ से टेबल से ही सीधा कैलकुलेटर में आंसर निकालो इसका नीचे। जब आप आंसर निकाल लोगे यहीं पे कैलकुलेटर से कॉस्ट निकाल लोगे, फिर आप एक स्क्रिबल करके उसको आप लिख के इंटरेस्ट माइनस करके आप, इफ यू हैव इनफ टाइम टू कैलकुलेट दिस, अदरवाइज यू कैन ड्रॉप इट फॉर द लास्ट। तो आपको ये करना है कि अगर वो आपस में लिंक नहीं है और लेंथी क्वेश्चन है तो आपको उसके लिए थोड़े टाइम के लिए आपको छोड़ देना है, वो आप लास्ट में अटेम्प्ट करो। यस हिस्ट्री, आपका कोई क्वेश्चन था? सर इलस्ट्रेशन 19 सर इन्वेस्टमेंट डिसीजन में कैपिटल बताइए बजट। क्या इशू है। कुलदीप, आई थिंक आपका डाउट क्लियर होगा। यस सर, यस यस। ओके, या सिस्टी, हाँ क्या डाउट है आपका उसमें? सर एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? एडजस्टेड मत, वो अब मुझे एक बार क्वेश्चन देखना पड़ेगा उस क्वेश्चन में किस बेसिस पे उसका हुआ है। नॉर्मली एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू के लिए हमारे पास क्या रहता है कि जो भी हमारे पास एडजस्टमेंट गिवन है या कुछ भी हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है उसको हम एडजस्ट करके, हम अपना रेट में एडजस्टमेंट करके उस बेसिस पे हम एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। पर्टिकुलरली आपका रजिस्ट्रेशन 19 के लिए आप मुझे एक बार अपना फ़ोन नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर आप मुझे मेल कर देना विद द रजिस्ट्रेशन नंबर एंड द पेज नंबर। I will call you and clear your doubt for specific registration. If you have थैंक any यू। general doubt, you can ask me. ठीक है, हम will end the session. Thank you Kuldeep, thank you Akkam, thank you Sastri, and thank you other students. We'll end the session over here. Okay. Nisarg ji, tech team, थैंक यू सर। thank you so much. Yeah, we'll end the session in 1 minute. Okay. Yeah. Thank you so much students. So we are ending the session over here. Sastri, how to revise the FM? So basically आपको FM ऐसे रिवाइज करना है, you have to go through the saransh. I hope you have gone through the saransh. When you go through the saransh, you will go through each and every formula in short, and make your notes also when you have the handwritten notes. Uh, it will stay in your mind for a longer period of time. अब आपके फार्मूलाज क्लियर हैं, अब आपने हैंड रिटन फार्मूलाज भी लिख लिए। अब आपके फार्मूलाज जब आप क्लियर हैं उसके बाद आप कॉन्सेप्ट पे आओ कि कोई भी फार्मूला किस बेसिस पे डिराइव हुआ है। अब आपके कॉन्सेप्ट भी जब क्लियर है, आपके फार्मूला क्लियर है, अब आप नेक्स्ट पार्ट आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस। जब आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हो तो आपके जितने डाउट्स होते हैं कि कॉन्सेप्ट और फार्मूला को लिंक करने में, वो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे आपका क्लियर हो जाएंगे डाउट। तो इन दिस वे यू कैन रिवाइज द एफएम। आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, फिर फार्मूला क्लियर करना है, देन यू हैव टू प्रैक्टिस। In this way you can revise the whole FM, and FM is a very small area in the intermediate. When you go through the AFM in the final part, you can see how huge is the financial area
in your real life, in your business life, or in your job life, financial management plays a crucial role, and it is a huge area where you can earn a lot and make a huge difference in your earning life. यस सर मतलब डेली सर एक एक चैप्टर रिवीजन करने से हो जाएगा और फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड केस हाँ, अगर सिनेरियोज। आप एक काम करना, अगर आप एक चैप्टर आप रिवाइज कर रहे हो तो उस दिन एटलीस्ट उसके 2-3 क्वेश्चन आप साथ में प्रैक्टिस करो। मतलब आप जिस दिन कॉन्सेप्ट आप रिवाइज कर रहे हो उस दिन आप उसके क्वेश्चन भी करो। उसके बाद आप हर हफ्ते में 15 दिन में आप जैसे आपने सारे चैप्टर या लेट से 5 चैप्टर आपके आपने रिवाइज कर लिए, उसके बाद आप दोबारा से एक दिन लगा के सिर्फ उस दिन आपको क्वेश्चन नहीं करना है। आपको सारे के सारे 5 या 6 चैप्टर जो आपने अभी तक कर चुके हो उनको एक बार सारांश या जो आपने फॉर्मूलाज बनाए हैं आपको मतलब एक बार गो थ्रू करना है सब कुछ। आपको इस वे में आप रिवाइज करोगे तो आपकी ग्रिप बनी रहेगी जो आप पहले करके आए हो, अदरवाइज यू विल मिक्स एंड मैच एवरीथिंग। सर एक्चुअली मुझे 2 ही सब्जेक्ट देने हैं, एफएमएसएम एंड ऑडिट, 4 सब्जेक्ट्स ऑलरेडी क्लियर। अच्छा, तो एफएमएसएम में तो आप इजीली आप एजम्पशन लेके आ सकते हो। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस एफएम में कर लोगे, एफएम बहुत एफएम एसएम मतलब एसएम में आपके न्यूमेरिकल इतने होते नहीं है। एसएम में अगर आपने एक बार पढ़ाई कर रखी है तो आपको दोबारा से बस रिवाइज करना है। एफएम में आपका बहुत छोटा सा एरिया है, इसमें आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लोगे उतनी ज़्यादा आपकी ग्रिप बन जाएगी। जैसे कोई भी आपके रेशियोज में डाउट आते हैं कि आपको सेल्स यूज़ करना है, सीयूजीएस यूज़ करना है, जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते जाओगे ना और क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, जैसे अभी सेन गुप्ता सर ने बोला था, when there is an inventory turnover ratio you have to use the COGS, so when you have to use the profit element or not, ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी से पता लगेगा कि इन्वेंट्री में हम क्या इंक्लूड करते हैं। इन्वेंट्री में ऑफकोर्स हम प्रॉफिट पार्ट तो इंक्लूड करते नहीं है, इसलिए हमने COGS करा। वर्किंग कैपिटल में कभी हम प्रॉफिट पार्ट इंक्लूड करते हैं, सिंस वी हैव द रिसीवेबल्स एंड वी हैव इन्वेंट्री बोथ इन द वर्किंग कैपिटल, यू कैन यूज बोथ COGS और सेल्स। सो आपको ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं कि आपको ये रखना है कि ये कोई फॉर्मूला है तो इसका बेसिस क्या है कैलकुलेट करने का, इसका रीजन क्या है। तो concept clarity is must in financial management as well as the cost and management accounting, and you have cleared the cost and management accounting। तो अब आपको एफएम पे फोकस करना है। ऐसा में आपका थ्योरी मोर ऑफ द थ्योरी पार्ट, तो आपको उसको डेली बेसिस पर थोड़ा 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 रिवाइज करते रहना है। ऑडिट के लिए, ऑडिट का भी हमारा जो वेबिनार हुआ आप उसको गो थ्रू करना, उसमें मैम ने आपको बताया होगा कैसे आपको रिवाइज करना है। यस सर, आई ये अटेंडेड या यस्टरडे। तो आपका इजीली आप क्लियर कर जाओगे। ऑल द बेस्ट। ठीक। थैंक यू सर। सर मतलब मुझे अभी 4-5 दिन एक-एक चैप्टर पढ़ना है, उसके बाद 5वें दिन जितना भी चैप्टर पढ़ा है, उसके हाँ, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं सिर्फ और फॉर्मूलाज़ समझ। उसके क्वेश्चन से पहले ना आपको 5वें दिन आपको क्या करना है, छठे दिन जैसे आपने 5 दिन आपने 5 चैप्टर रिवाइज कर लिए, 6 डे पे आपको सिर्फ और सिर्फ उनके कॉन्सेप्ट और उनके फॉर्मूला से रीड करने हैं। आपको 5th डे पे कोई क्वेश्चन अगर टाइम मिलता है तो ऑफकोर्स करो, आप अगर टाइम नहीं मिलता तो आपको 5वें दिन का जितना आपने करा आपको सारा रिवाइज करना है, सारे कॉन्सेप्ट और सारे फॉर्मूलाज, क्योंकि फॉर्मूला इज मस्ट इन एफएम। अगर आपको फॉर्मूला में कोई भी दिक्कत आ गई तो आपको क्वेश्चन भी आता हो फिर भी नहीं कर पाओगे। यस सर। कुलदीप, ऐसा कोई पर्टिकुलरली एरिया नहीं है जहाँ पे कॉमन मिस्टेक्स होती हो, लेकिन जैसे मार्केट वैल्यू में बच्चों को डाउट आ जाता है क्या लेना है, तो उसके लिए मैंने आपका क्लियर करा है। वर्किंग कैपिटल्स में आपका रिसीवेबल मैनेजमेंट में थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो उसमें आपको प्रैक्टिस करना है काफ़ी ज़्यादा। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आपके ग्रिप बनेगी और आपके जो मिस्टेक्स होती है, सिली मिस्टेक्स जिन्हें हम कहते हैं छोटी छोटी सी, वो आपकी ख़त्म होगी। तो ऐसी कोई पर्टिकुलर एरिया नहीं, लेकिन कुछ एरियाज जो टिपिकल होते हैं जहाँ पे कंफ्यूजन आती है, उन एरियाज में आपको प्रैक्टिस करना है। आप अपना पॉइंट देखो आपको कहाँ पे दिक्कत आती है, आपको उस एरिया पे फोकस करने करके आपको उसकी प्रैक्टिस करना है, या यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट ऑन दैट एरिया। ठीक है, ठीक है निसार जी, हम टेक टीम हम एंड करते सेशन। ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच एवरीवन।